अब मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ चलो कर ही दो. And I did, like I shut like this breeze blowing and the door opened and closed and I said, Mummy, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है. And then I barked and it. आपको पता है साड़ी कंपटीशन बांधने में मैं लड़कियों को मेरा. हाय मिर्ची प्लस पर मैं हूँ आरजे न्यानेश्वरी एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड बिकॉज एक ऐसे प्रोजेक्ट के रिलेटेड इंटरव्यू करने आई हूँ जिस प्रोजेक्ट का नाम ही मेरे फेवरेट फूल का नाम है. और ये खास करके इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आज सनफ्लावर सीजन 2 का इंटरव्यू है तो थोड़ा सा मस्का मारने के लिए बोलना पड़ेगा. जेन्युइनली एंड आई फील कि अ लॉट ऑफ पीपल हु नो मी से कि यार यू आर वेरी सनफ्लावर एनर्जी. आई डोंट नो व्हाट दे मीन बट आई जस्ट टेक इट एज एनी कॉम्प्लीमेंट. हाँ इसीलिए तो ये येलो क्यों पहन के आई हूँ मैं, इसीलिए तो पहन के आई हूँ. सनफ्लावर सीजन 2 की पूरी टीम मेरे साथ एंड सनफ्लावर सीजन 1 जितने लोगों ने पसंद किया है इतना वेट किया है, फाइनली इट्स गोना कम एंड वी आर वेरी एक्साइटेड. वेलकम टू मिर्ची प्लस ऑल ऑफ यू ऑल. थैंक यू सो मच. अदा को तो मैं लिटरली परसों ही मिली थी. So it's like we're hanging out together for different projects almost. Sunil, we met at the same venue a year back आपके किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए and Vikas and Ranvir we are meeting for the first time. So very excited. मुझे सबसे पहली शुरुआत ये करनी है कि जैसे मैंने कहा सनफ्लावर नाम से ऐसे लगता है कि बहुत खुशनुमा, positive and nice, but there is a 360-degree flip side to this entire sunflower. मुझे पूछना है विकास, especially to you, like you're the showrunner of the show. ऐसा नाम लेके इसको इतना ट्विस्ट कर देना. Of course, it is the society's name, but still, like देखने में ऐसा लगता है कि वाह यार क्या ही it's a nice positive series it is going to be. Actually, it is a very happy, positive series because it doesn't take anything too seriously. So, including a murder, Right? So casually saying, देखो murder तो होते रहता है यार. उसमें क्या है? So it is one of those shows where everything goes, you know. Yeah. Characters change, it goes. Murder happens, it goes. New people come, it goes. We comment on the society at large, it goes. But we're not trying to. We're trying to enjoy that this is the reality of life, and now let's just enjoy it. So that's why it's very easy to keep writing. I mean, if he gives us more money, we would have written 20 episodes. Because first we have to stop ourselves from writing because we can keep writing scenes. And even when we write a scene which is for 2 pages, if we want, we can write for another 5 pages. Right. Those 2 people can be discussing anything and go on and on with it. So it's like one of those endless fun situations. And when neither trying to make a point, nor are we trying to not make a point. So somewhere in the middle, we're hanging and having a great time. That's such a great point to have. Very interesting. But like I said कि जैसे इस फूल को देख के एक परसेप्शन होता है, इस नाम को देख के एक परसेप्शन होता है, लेकिन है काफी 360 डिग्री अलग. मतलब पॉजिटिव है, बट लाइक यू सेड देयर इज ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एंड ड्रामा एंड एवरीथिंग इन इट. दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ यू. आपको देख के लोगों का जो परसेप्शन होता है, ठीक है, दैट इज ऑन वन साइड, बट ऑन द अदर साइड ऐसा कोई आपका गुण है जो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप ऐसे भी हो सकते. अब मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ चलो कर ही दो. Once Vikas sir कुछ सेट पे I don't know कुछ हुआ था. Vikas sir said about me, but you know he is very calm and he's normally very relaxed. He doesn't get angry, he doesn't cold and all. So he's just sitting and watching me. Something happened and he said this thing about me and it stayed with me. 1 second में 0 से 100 जाता है. I was like he's right. Ferrari. Because I sometimes I get a little impatient and that insight has helped me a lot as a human being. Don't go 0 to 100. पहले थोड़ा भाई तू 20 पे जा, फिर 40 पे जा, फिर 60 पे जा. Ada, anything you would like to say? कोई है? रोजी की काफी क्वालिटीज है जो मेरे में रियल लाइफ में भी है. Maybe when you all watch the show. Like you want to name a few? Guess which one from the show. Entertainment वाला या I don't know murder वाला. आप देख लो शो. Murder वाला is quality. कि हाँ ऐसे होता ही है. We interested. गाँव से मर्डर करना. हाँ, just कातिलाना आना. Casually कातिलाना. Not like cut up the bodies and keep. क्या डिनर भी करेंगे फिर से? कत्ल करने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है. Casual. ऐसी कोई क्वालिटी आपकी जो लगता नहीं है आपको देख के कि आप ऐसे मिल सकते. मेरी एक्टिंग सारी क्वालिटी तो मेरे अंदर कमी है, लेकिन मैं जैसा हूँ. हाय फिशिंग देखने पे शायद ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा शांत नहीं लगता. में बहुत सारे क्वालिटीज हैं इनके. बहुत अच्छे कथकली डांसर हैं, साड़ी ड्रेपिंग में बहुत एक्सपर्ट है. लाइक एक्चुअली
ही इज वेरी गुड एट लाइक 2 मिनट में साड़ी ड्रेपिंग कर सकते हैं. बॉलिंग में वो चाहते और उतारने को कितना टाइम लगता है? वो मुझे नहीं पता, इनको ही पता होगा. बांधने में आपको पता है, साड़ी कंपटीशन बांधने में मैं लड़कियों को मेरा हाँ. वो सनफ्लावर के सैलेड भी बनाते हैं. My God, okay. बहुत ही टेस्टी वन. It was yummy. The one that you are giving, बहुत tasty. Sunflower salad? Sunflower salad, I'm hearing for the first time only. Used to give me on set. Yes, पाजी दसो. यही किया है. कई स्कैच में हम लोगों ने सनफ्लावर सैलेड ही बनाया शो में. All qualities of your. हाँ. सर्वगुण संपूर्ण. अदा खान कितनी तारीफ, मतलब को एक्टर इतनी तारीफ करे तो तारीफ देखो, सनफ्लावर का सैलेड बनाते हैं. तारीफ कौन कैसे? अरे that is such a big तारीफ. It is nice. सैलेड खाएगा कौन, बना तो लेते हैं. We want this. मेरे glowing त्वचा का राज. Karaz, यही है. Lovely. But because there's a sunflower society and you know वो सारी जो characters interesting एक society में हो सकते हैं, all the possibilities are there. और जितने लोग हाउस हंटिंग कभी करे हैं या फिर घर ढूंढा है मुंबई में, ऐसे ही तरह तरह के रैंडम से लोग आपको अलग अलग कॉलोनीज में और सोसाइटीज में मिलते हैं. आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू ऑल, कभी यू नो योर मे बी योर फर्स्ट हाउस इन मुंबई और रीसेंट हाउस इन मुंबई, रेंटेड हो या खुद का हो, ऐसे अतरंगी लोग किसी अतरंगी सोसाइटी में मिले हैं आपको इन रियल लाइफ? फॉर वेरी मेरा एक बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ था जहाँ पे मैं एक बार रेंट पे रहता था. तो मेरे ऊपर जो रहते थे, आई वाज रेंटिंग और उनका अपना फ्लैट था. तो ये हायरार्की होती है आई थिंक हर बॉम्बे की, जो मुंबई की कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कि जो ओनर होता है वो ओनर है, जो रेंट पे है वो रेंट पे है. सो मेरी कंप्लेंट उन्होंने सोसाइटी में क्या की कि ये अपने घर में सिगरेट पीता है. तो मैंने कहा मैं तो अपने घर में सिगरेट पी रहा हूँ. नहीं, कहता वो धुआं तेरी खिड़की से बाहर आता है, फिर ऊपर आता है और फिर मेरी खिड़की से अंदर आता है. तो मैंने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कहता तू अपनी खिड़कियां बंद करके सिगरेट पी. तो मैंने कहा तू अपनी खिड़की बंद कर ले, धुआं नहीं आएगा. बट उसमें बिकॉज देयर वाज यू नो आई वाज अ मीजली रेंटर एंड ही वाज अ फ्लैट ओनर. मैं वो कंप्लेन करने वाले. आपको क्यों लगा कि आप इसमें सही हो? कम ऑन, अपने घर में नहीं, अगर हम घर में अपने घर में नहीं पी सकते तो क्या? आप इस सोसाइटी में आपका धुआं किसी और की तरफ जा रहा है और वो आदमी आपको कह रहा है कि अपनी खिड़की बंद करके पी लो. मैं धुएं में अंदर बैठूं? अच्छा. उसको फ्रेश आवाज. मैं एक वेलकम टू द सनफ्लावर सोसाइटी मीटिंग. अरे आप सिगरेट बंद कर दो, सब प्रॉब्लम्स सबके. नहीं, मैं पीऊंगा सिगरेट. ये काट देना. एक्चुअली आई डोंट वांट टू गिव द रॉन्ग मैसेज टू सोसाइटी. Well, now the final outcome of this entire discussion. But you know the beauty is when you go to buy an apartment, there is no interview, but you're buying. Yeah. Now you could be a criminal, you could be anything. आपका नेचर खराब हो सकता है, आपकी 4 बीवियां हो सकती है, आप कुछ भी हो सकता है. Nobody is asking you anything, right? You're buying. When you're renting, there are 10 people sitting in front of you asking you 10 questions. Yeah. Right? That dichotomy is the problem. So what gave the authority to the owners to question the renting people just because they can't afford to buy or whatever that reason might be? So that is my basic issue कि who are you to question? नहीं तो पहले जब आप सोसाइटी में आ रहे हो, आप बोलो कि मैं सारी सोसाइटी में जो पहले 10 लोग खरीद चुके हैं वो उनका इंटरव्यू लूंगा. Then I'll decide whether I want to buy. It's a never-ending interview whirlpool, right? It's cute that it is an interview in the first place. Yeah. Like you want to get a place on rent and you are interviewing कि please देख लो कि क्या मैं लायक हूँ. अभी पता अगला सेशन क्या होने वाला है कि now if there are 5 people asking for the same apartment to rent, there'll be a group discussion. Auditions होंगे. The group और जी नहीं. it's like getting into IM. आप लोग हैं कुछ घर रिलेटेड ऐसे? पुराने रईस लोग हैं हमारे. मैं वन रो किचन अपार्टमेंट में रहता था. तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि हमने कहा कि अगर आपको रात को जाने तो आप लिफ्ट से ही जाएंगे, सीढ़ी से उतर के नहीं जाएंगे. लोग हमारे बिल्डिंग के सेक्रेटरी, हाँ, ये 6th फ्लोर पे रहता था. उनकी चक्कर ये था सेक्रेटरी साहब कि वो सब रात को लिफ्ट से ही जाएंगे, सीढ़ी से नहीं जाएंगे. उनके घर में 14 लोग रहते. हाँ. तो पहले मुझे पापा, फिर उनके 7 बच्चे सोचते थे एक के बाद एक, और 6-7वें बच्चे के बाद वो घर के बाहर आ जाते. तो अगर आपने लिफ्ट करवाते हैं तो सीढ़ी से जाना अलग है, क्योंकि उनके किसी के बच्चे के टांग के ऊपर से आपको पावर रख के जाना है, जाना है आपका. तो आप वो एक रूल था. तो उनका मैंने 7-8 बच्चे थे उनके, मम्मी पापा और इन बच्चों का भी तो बच्चे हो गए.
ये रहते वन रूम किचन मेरे को तो समझ नहीं आ रहा इतने बच्चे पैदा भी कैसे हो गए एक ही रूम में Adah, you have any experience? अपने घर पे नहीं, पर पिछले महीने आई वॉज स्टेइंग इन विरार, बिकॉज हम लोग विरार से जंगल में शूट कर रहे थे, एंड द जंगल वॉज 2 hours away फ्रॉम द होटल ओनली, एंड दैट होटल वॉज अ 2-star होटल, एंड इट वॉज अ लिटिल शेडी टाइप का होटल, बट दे सेड या तो आप घर जाओ बट टू ड्राइव बैक इज 4 hours and 4 hours every day. I said नहीं, आई स्टे इन दैट होटल. तो वो मेरा घर बन चुका था 1 महीने के लिए, एंड वो मुश्किल रोल था, तो आई सेड आई स्टे हियर ओनली. पर यू कैन हियर व्हाट्स हैपनिंग इन द अदर रूम्स बहुत क्लियरली. तो नेक्स्ट रूम में देयर वाज समबडीज हनीमून फर्स्ट नाइट या कुछ था, एंड मुझे 4 बजे उठना था शूट के लिए नेक्स्ट डे, एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन दैट आई वाज रियली नर्वस अबाउट. मैं लाइंस पढ़ रही थी एंड आई सेड आई नाइसली स्लीप, एंड मैं फ्रेश होके जाती हूँ, सो आई रिमेंबर द होल थिंग एंड आई डोंट मेस अप. एक्शन भी था, तो आई सेड वेल रेस्टेड एंड ऑल, मैं जाऊँ. एंड ये एक्चुअली प्रूफ है, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो भी डाला था बिकॉज आई रियली एंजॉयड इट. तो दे वर no, not an honeymoon was happening in, or there was some loud music. The music stopped and then there was constant like ठक 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 on the door, and बहुत सारे उनके friends उनको honeymoon करने नहीं दे रहे थे, basically उनको population बढ़ाने नहीं दे रहे थे उनके friends, बाहर से like ठक 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 they were doing. So I waited, so I opened and then I didn't show my face. I said please आवाज मत करो, मुझे सोना है, thank you, and I shut, but they didn't, they continued. So then I opened the door and I did like I shut, like this breeze blowing and the door opened and closed, and I said mummy मुझे बहुत डर लग रहा है, and then I barked and went and then I said mom see तुम्हें rabies है, तुम बाहर नहीं जा सकते, and I made different voices and I did this whole thing and I opened and shut the door like that. सन्नाटा उसके बाद, सन्नाटा मतलब हनीमून के लोग भी, बाहर के लोग भी, there was no sound anywhere. I opened and then I said now I sleep, but मैं इतनी चार्ज हो गई थी वो पूरी परफॉर्मेंस के बाद कि मुझे ही नींद नहीं आई. But I had so much fun. I recorded the whole thing on my phone to send my mom and my friends, and then it was so entertaining. I was watching it only and laughing, and then I was like, I'm so bad. So yeah, I am that bad neighbor maybe who does. Okay, I want to come to Ranveer. अभी भी आपकी glasses are looking fab. And you know, ये बहुत interesting मुझे लगता है जब ऐसा कोई prop होता है character का जो याद रह जाता है. For example, in हेरा फेरी we had you know those glasses that were there he was wearing, बाबू भैया, and वो याद रह जाता है कि ये वाले glasses. उन्हीं को होमाज है ये. I want to ask you, like you also have glasses in this series. कोई what was the thought behind ये ऐसा कुछ था? I think it was essentially that you know, Sonu's character, who I have to take a moment to say I don't think anybody else could have pulled off Sonu. You know, so it's absolutely great for all of us that he's playing Sonu. And so I always felt that, you know, this first time I read the script, and that's what I told Vikas sir also, I get this Alice in Wonderland feel. You know, you've gone down this rabbit hole, in the sunflower rabbit hole, and you're meeting these oddball characters. So jab police wala aaye, you know, it was just like that somebody with big eyes kind of coming in to scrutinize each and every one. So the idea was to create something like that. It was also just to get that fine balance of some authority and stupidness together, you know. Very interesting combination. Yeah, so it's like the glasses make you look little stupid, but at the same time the authority is very high. But I must tell you, when he is in the show, he can't see till here also. He's blind, so he has to count his steps to go. So before the scene, he's not learning his lines, he's counting steps. 6, 3, 4 character. So imagine he is performing, at the back of his head he is memorizing the steps, and then he has to perform as well. So कभी उल्टा हो जाता है, 1 2 3 4 5 लाइन बोलती चलते हुए वहाँ खड़े होकर 1 2 3 4 5. Very interesting. Adah, I have to ask you, the other day also हम बात कर रहे थे about the way you choose your scripts. You know, अलग-अलग traits दिख रहा है, लेकिन एक तो है कि there is nothing white or black. बीच का grey material बहुत है. क्या thought होता है? Like why did you choose Sunflower? They chose me to do it. I always believe. I think makers, if they see something in someone, and that's how you get a role. I intuitively pick what I think is right, but I think finally the stuff I get is, I'm fortunate that somebody thought she can pull this off, or she can play this, or we'll trust her with this. So I just feel gratitude. No, the moment we heard. So you know what happens when you're casting? आपका पूरा टाइम चल रहा होता है, and you're thinking. पहले तो खैर वो न्यूज़पेपर आता था, तो you could see people walking out of a party. So you say, this was possible. This was, because they're nowadays no, and I'm not at least on any social media. So there's no way you can check. So we're going on for almost 1.5-2 months, and then Weber one called. Weber said,
Adah, I said, oh, that's it. It is. So nice. We were looking for a weirdo, we got it. Yeah, I actually want to ask you, ये क्या कौन है ये क्यों है ये क्या सीन? ये मेरे जानू है. एक जिस्म दो जान. Okay, Sunil, I have to come to you. You know, हमने आपका काम overall ही बहुत enjoy किया अब तक. You know, the last time we were speaking, we spoke about your radio, your affiliation with radio as well. But एक चीज, you know, be it जवान, पठान, all these films that have come up, आपका role उसमें था, बहुत पसंद आया था. मुझे पूछना है कि how was it working with SRK? And कोई एक ऐसी trait, मतलब we know कि बहुत लोग fan हैं, all of that is there. As an artist, एक quality जो आपको उनमें दिखी, which as an artist stayed with. बहुत सारी क्वालिटी और मैंने बड़ा एंजॉय किया कि क्वालिटी थी वो he notices everything and he makes everyone feel special. इतना नहीं लगता नहीं पॉसिबल है किसी के लिए what he does and nobody command but he also is passionate about everything. Very important quality, I think, making everybody feel special. Then we have to ask you about Salman sir as well. ये सेम क्वेश्चन है आपके लिए भी, क्योंकि ये क्या होता है बहुत बार ये लाइक पॉपुलैरिटी तो हमें दिखी जाती है, बट एज अ पर्सन एक ऐसी कभी कभी वो ट्रेट होती है जो हमारे साथ रह जाती है इंसान की. तो सलमान सर, व्हाट वाज इट? I think what I love most about Salman sir is that, you know, what I relate with is that he doesn't have room for BS, too much room for BS. And I think maybe that's why people feel a little wary, you know, to approach him and all. He has this inapproachable vibe. But I have always found him to be very generous, very kind. He has, I imagine he has a low threshold for BS, which I share with him. So I always enjoy hanging with him, working with him. अभी हम सनफ्लावर सीजन 2 के लिए यहाँ पे है, लेकिन because Ranvir you're here, I have to ask about one film that I really love, which is खोसला का घोसला. And I feel it has a cult audience. एक कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो इस फिल्म के लिए पागल हैं, जिनको बड़ा मजा आता है every time they watch the film. And I can't stop but ask you कि कोई भी ऐसा किस्सा behind the stories, because हम सारे वो fan club वाले लोग हैं, तो we want to know something about खोसला का घोसला from you. But there are many stories, but I think one which I can share, because we know we are sitting here as a team and what we went through as a team who made the film. Because I don't know if you know that the film was shot, I think by 2003 or something, and it released 3 years later. So it was stuck for 2.5 hours. But it was just the team keeping the faith together, you know, Jaideep, Dibakar, all of us, Anupam ji, Boman, we used to meet together, you know, try and figure out ways how we can get this film out. So that kept on happening for a year or two before, you know, it got picked up by UTV and all, and people saw it. So I think, I mean, that's the story I want to share with this team, you know, that how teams that believe in something together, you know, work together, and sometimes you face overwhelming odds, but if you have faith in what you've done, you know, it finds its audience. Pep talk, guys, come on, pep talk. But I'm sure अभी भी जब लोग आपको out of all the work that you जी, did, अभी भी होता है कि मैं बाथरूम में होता हूँ और मेरे सडनली आवाज आती है, हम यहाँ पेशाब करने आए. So it happens and it's very annoying, honestly. So if anybody is watching, in the bathroom, don't come and say that to me. I'm not stopping. I love that. Yeah, wow, you should be like, yeah, no? Fantastic. cheers to Sunflower season 2, and great that you had such a set, ऐसी एक कहानी और ऐसी टीम जो इतनी excited थी to work. It's beautiful, and like you said, does not happen every time with every project. So when it happens, it needs to be celebrated. Yes. Congratulations to all of you all. बहुत शुभकामनाएं. I'm sure ये season भी काफी धमाकेदार होने वाला है. Thank you so much, and thank you for being on Mirchi. Thank you, guys. Thank you.